Co-powered by Panasonic Smart AC for healthier homes. Supported by IMFA 60 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସ। सामना करिछे एबे धीरे धीरे अर्थनीतिर गाड़ी तार पटरी पुणी थे धरलाणी और धीरे धीरे आम आग को चलीचे आग को आम केमती चलवा से भी आम गोटे निश्चित भाव में बड़ आह्वान ओटीवी वार्षिक चिंतन अधिवेशन फोरसाइट 2022 पुणी थे मुझे कही रखे जे आमर चलित वर्षर जहाँ संदर्भ रही थीम रही ऑफ द कन्वेंशन दिस विनर्स एंड द डिसएडवांटेज इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एमती गोटे परिवर्तित सामाजिक एवं अर्थनैतिक तथा राजनैतिक धारा उपरे विचार आलोचना करने को आम मैंने समस्ते आज ए मंच रे एकाठी होइछे। ओटीवी फोरसाइट 2022 चेंजिंग टाइम्स चेंजिंग माइंड्स। तेबे चलंतु आरंभ करबा आज आमर ई कार्यक्रम मो मंच उपर को आसवा पई अनुरोध करी ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क मैनेजिंग डायरेक्टर तथा को फाउंडर जगी मंगत पंडा को। May I request you, ma'am, to please deliver the welcome address. Thank you. नमस्कार OTV Foresight 2022 को मु आपण मानकु स्वागत जनाउछि। प्रति वर्ष परि ए वर्षर फोरसाइट रे अनेक क्षेत्रु ओडिशा और ओडिशा बाहर बिजनेस आउ अन्य क्षेत्रु विशिष्ट व्यक्ति आम संगे अछंती। ए वर्ष आमर फोकस भारत रो इकोनॉमी और बिजनेस रहिबो जेहेतु कोविड समय रे आम देश और ओडिशा रो इकोनॉमी उपरे बेस प्रभाव पड़िछि किंतु ता सत्ते भी केवल एही वर्ष रे अनेक नुआ उद्योग आरंभ हेछि एवं ता भितरे अनेक उद्योग 1 बिलियन रो वैल्यूएशन रे को पहुंची पारिछि। एटा आम देश पय एक गर्वर कथा। आमर आजिरो फोरसाइट रो थीम होछि कोविड विनर्स एंड द डिसएडवांटेज्ड इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आउ एही थीम उपरे चर्चा करिवे आमर आजिरो अतिथि। ओपनिंग सेशन रे आमर मुख्य अतिथि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमार जी और सद्गुरु श्री जगी वासुदेवन जी तांको मंतव्य रखिबे। आउ तापरे दिन सारा आमे अनेक विशिष्ट व्यक्तिंकर मंतव्य सुनिबु। आमे आशा करूछु कि आपण माने ए वर्षर डिस्कशन भलो पाइबे। आउ शेषरे मु आपण मानकु आम ओडिशा स्पीकर्स आउ आम स्पीकर्स जो बाहरु आछंती तांको विषय दीपद कहिबी। आमर पोस्ट लंच सेशन रे डिबेट रे पार्टिसिपेट करिवे श्री प्रताप सारंगी ऑनरेबल एमपी बालेश्वर, श्री गणेश्वर बेहरा सीनियर कांग्रेस लीडर, श्री नारायण रेड्डी सीनियर सीपीआई लीडर एंड श्री संदीप मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट। आउ ए सेशन को मॉडरेट करिवे आमर सीनियर एडिटर राधा माधव मिश्रा। आमर आज अतिथि जो बाहरु आछंती से होउछंती श्री गोपाल कृष्ण, श्री हरित नागपाल, श्री आदित्य प्रकाश और हुमा कुरैशी। मु समस्त को फोरसाइट 2020 को स्वागत करुछि। तांकु एथि उपस्थित अतिथि और आमर स्पॉन्सर्स को मु धन्यवाद भी जनाउछि एवं सबुठु इम्पोर्टेंट आमर दर्शक मानकु जो माने आमको ओटीवी को दीर्घ 25 वर्ष धरी नंबर 1 चैनल रो मान्यता दे आछंती ताकु विशेष विशेष धन्यवाद। जय जगन्नाथ। A very good morning to all of you and a very warm welcome. A special welcome to our chief guest, Honorable Union Minister for Agriculture, Shri Narendra Singh Tomar ji, who will join us virtually from UP since he has been busy campaigning in UP. Tomar ji, मैं OTV की तरफ से और सब सदस्य की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी कहती हूँ क्योंकि आपने आपके बहुमूल्य समय से हमें थोड़ा समय दिया। I take this opportunity to extend a very warm welcome to our speakers from outside Odisha today. Mr. Gopal Krishnan,
whose country head marketing function and product group head TCS Ion, Mr. Harit Nagpal, MD and CEO of Tata Play, Mr. Aditya Prakash, CEO of Asotech, and Huma Qureshi, Bollywood actress. We have been living in for the last 2 years. We don't always get over or move on from our trauma. We are forced to make outliers of the COVID era. The businesses that just did not survive the pandemic but adapted, right? COVID, winners and the disadvantaged in the new world order. Time to do so. If Foresight 2021 was a celebration of the undying human spirit, Foresight 2022 will honor human potential to grow. In the last 2 years, the ever-growing list of emerging trends in digital and healthcare transformation, growth of online education, vaccine development, and so forth, all point towards that one secret of success, that is adaptation and innovation, which I think most businesses swear by. But this especially holds true for startups, as the culture of innovation is the very premise on which the startup ecosystem is built. Until a couple of years ago, unicorn was an elusive milestone for startups. But in what can be termed as a blockbuster year, 2021 saw creation of 42 unicorns in India alone. India is now home to the third highest number of unicorns in the world after US and China, surpassing UK. And this is indeed a proud moment for us in India. The world is unlikely to return to what it was in the pre-COVID era. And as history has shown us, choices made during crisis can shape the world for decades to come. What will remain is critical is the need for collective action to build economies that deliver inclusive economic growth, prosperity, and safety for all. I do hope that you find today's sessions informative and engaging. Finally, I would like to thank all of you here, and especially our viewers who have supported OTV for the last 25 years and have held us at the #1 position continuously for 25 years. Thank you. Namaskar. Jai Jagannath. Thank you so much, ma'am, for the warm words of welcome. स्वागत अभिभाषण ପାଇଁ बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती जगी मंगत पंडा महोदया। तो एबे आमे आरंभ करबा ओटीवी फोरसाइट 2022 रो आजिर आमर प्रथम अधिवेशन। आम सहित दिल्ली रु जोड़ी होछंती केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री तोमर एबे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रो दायित्व रे रहिछंती। कार्यव्यस्तता जोगु श्री तोमर आम सहित फिजिकली तो उपस्थित रही पारु नाहंती, किंतु ही इज गोइंग टू प्रेजेंट हिज inaugural address virtually. The topic बा जो संदर्भ रही आलोच्य विषय वस्तु जहाँ रही impact on agriculture and farmers due to pandemic, अर्थात महामारी जोगु कृषि एवं कृषकों उपरे पड़िथिबा प्रभाव। It is an absolute honor to have with us as our chief guest, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Narendra Singh Tomar ji. May I request you, sir, to please honor us with the inaugural address. सभी को नमस्कार। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य उपस्थित, हम सब के आदर और श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य सदगुरु श्री जग्गी वासुदेवन जी, कार्यक्रम की आयोजक और ओटीवी के एमडी आदरणीय श्रीमती जग्गी मंगत पांडा जी, आदरणीय सारंगी जी, आदरणीय गणेश्वर मेहरा जी, आदरणीय नारायण रेड्डी जी, आदरणीय गोपाल कृष्ण जी, आदरणीय हरित नागपाल जी, संदीप जी, आदित्य प्रकाश जी और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े सभी
सम्मानित महानुभाव, बहनें और उपस्थित सज्जनों, आज OTV अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे OTV परिवार को और जो दर्शकों का एक बड़ा परिवार होता है, उन सब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। OTV उड़ीसा का बहुत अच्छा और लोकप्रिय चैनल है और 25 वर्ष सफलतापूर्वक OTV ने अपनी यात्रा को पूर्ण किया है। किसी भी संस्था, व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित उद्देश्य को लेकर 25 वर्ष की पूर्णता यह निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अवसर होता है। इस सुखद अवसर पर आज OTV परिवार उपस्थित है। उनके मन में जो उल्लास है, खुशी है, उसको मैं महसूस कर सकता हूं और उनके पर धन्यवाद देना चाहता हूं। रूबरू जहां हम सब पूरा देश रूप से निर्माण हो, जो विद्यमान की भी रक्षा की दृष्टि से जो मैं ने उस भूमिका को, यदि देश को सकारात्मक तैयार करे और ऐसा सकारात्मक उस जवाबदारी का क्षेत्र में और इसी भी को देखने में बड़ी सफलता करते थे। 21वीं सदी पूरी दुनिया के मानचित्र पर है। पूरा देश एक लंबे कालखंड के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जिनकी देश में अपील है, अपील की स्वीकारोक्ति है और उसके परिणाम स्वरूप अच्छा प्रसाद आज हमें सबको मिल रहा है। यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी, तो पूरा देश ऐसे मानो अपना काम है उठकर खड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप देश ODF हुआ। अब ODF प्लस की ओर हम बढ़ रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी स्वच्छता बढ़े, इस दिशा में हमारा प्रयत्न हो रहा है। इस दिशा में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इस दिशा में भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है और स्वच्छता का जो उच्चतम मानदंड है उसको भारत प्राप्त करे, इस दिशा में पूरा देश जागरूक है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबकी भागीदारी आज इस दिशा में निश्चित रूप से बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हम सबको ध्यान में है, हम कोरोना संकट से उबरते जा रहे हैं। जब कोरोना महामारी का विषय था तो निश्चित रूप से पूरा देश भी चिंतित था और दुनिया भी चिंतित थी और ऐसी स्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने समय रहते कदम उठाए, उन कदमों के साथ जनता जुड़ी और हमने अपने देश के अनुशासन को भी मजबूत किया, अनुशासन का पालन भी किया। जो साधन खड़े करने चाहिए थे समय रहते उन साधनों को खड़ा किया। उन सब साधनों को खड़ा करने में प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता तक की भागीदारी सुनिश्चित हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम तौर पर हम सब जानते हैं कि पोलियो का वैक्सीन मिलने में भारत को 20 वर्ष लग गए थे। जब ये कोरोना महामारी थी तो ऐसा लगता था इसका वैक्सीन हमें मिलेगा तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। भारत ने अपना वैक्सीन बनाया, दुनिया में उसे मान्यता प्राप्त हुई और आज हम यह गौरव के साथ कह सकते हैं कि 250 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को हम लोगों ने
वैक्सीन का डोज लगाने में सफलता प्राप्त की है। जो इलाज की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत सरकार और राज्य सरकारों ने खड़ा करने का एक सद प्रयत्न किया है। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत में वो सब कुछ है जो दुनिया में उपलब्ध है, बस भारत को जगाने की आवश्यकता है। भारत इस दिशा में जग रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि विकास की, समग्र विकास और संतुलित विकास, इस कल्पना को साकार करना आवश्यक होता है। एक लंबे कालखंड तक विकास की दृष्टि से भी असंतुलन खड़ा हो गया था। हम उड़ीसा राज्य को देखें, झारखंड राज्य को देखें, छत्तीसगढ़ राज्य को देखें। अब ये राज्य ऐसे देखें तो खनिज संपदा से सबसे अमीर राज्य हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गरीबी इन्हीं राज्यों में है। और इसलिए पिछले बार भारत सरकार ने MMDR एक्ट को अमेंड किया और जो माइंस हैं उनको ऑक्शन पर लेके आए। इसके कारण आज राज्य सरकारों को अच्छा पैसा मिल रहा है। राज्य सरकारें उस पैसे को गरीब के कल्याण में लगा रही हैं, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है और इन क्षेत्रों में विशेष रूप से विकास का संतुलन बन सके, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे IIM और IIT खोलने का मामला हो, चाहे एम्स चालू करने का मामला हो, चाहे और लॉजिस्टिक सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो। इस असंतुलन को समाप्त करना और इन क्षेत्रों में विकास के काम खड़े करना, यह मोदी सरकार की निश्चित रूप से प्राथमिकता है। हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र एक तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूरस्थ है, दुर्गम है। लंबे समय से पैसा होने के बाद भी वह विकास की बाट जो रहा था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले अपने कार्यकाल में लगातार इस बात की कोशिश की, नॉर्थ ईस्ट के हर छोटे से छोटे प्रांत में वो जाएं। एक बार नहीं, कई बार गए और उन्होंने सुनिश्चित किया केंद्र सरकार का हर मंत्री नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जाए, वहाँ पर अपने विभाग के माध्यम से जो किया जा सकता है वो करे। और इस बार के बजट में भी अगर हम देखेंगे तो 1500 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग से प्रावधान करके रखा हुआ है। PM गति शक्ति योजना के माध्यम से कोशिश है कि देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोजगार के अवसर खड़े हों। लगभग सरकार इस पर 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। इस बार भारत सरकार का बजट यह भी निश्चित रूप से 14% की वृद्धि करके रखा गया है और हर क्षेत्र में यह कोशिश की गई है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो गरीब का क्षेत्र हो, चाहे वो नगरीय विकास हो, सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से व्यवस्था बन सके। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब हमारे आधी आबादी बैंकिंग से ही जुड़ी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना प्रारंभ की। जनधन योजना के माध्यम से लोगों को अकाउंट खुले। आज अकाउंट खुल गए हैं, इसके कारण बड़ा बदलाव आया है। PM किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपया वार्षिक आय सहायता मिलती है। अभी तक इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खातों में जमा किया है। अब सोचिए कि अगर जनधन अकाउंट नहीं होता, आधी आबादी बैंकिंग से जुड़ी नहीं होती, तो आज ये DBT के माध्यम से 1,82,000 करोड़ रुपया हम कैसे पहुंचा पाते। ये 1,82,000 करोड़ रुपया प्राप्त करने में किसान को कितनी मुश्किलात भुगतना पड़ती। तो ऐसी स्थिति में आज पारदर्शिता के लिए भी जो काम हो रहा है वह भी अपने आप में अभूतपूर्व है। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, निश्चित रूप से हम सब भली भांति जानते हैं कृषि का क्षेत्र
भारतवर्ष के लिए मेरुदंड के समान है। कृषि की अर्थव्यवस्था यह हमारे देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। जब कभी भी देश पर संकट आया है या प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी हुई हैं तो इस अर्थव्यवस्था ने भारत का साथ दिया है। पहले भी एक बार मंदी का दौर आया था, तब भी कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने हमारे देश को खड़ा रहने में मदद की थी। और अभी हाल ही में कोविड संकट आया तो इसमें भी दुनिया की तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं। बड़े बड़े स्वचालित कारखाने वो बंद हो गए, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे किसान ने घनघोर परिश्रम किया। जब लॉकडाउन था तब फसल कटाई के लिए खड़ी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र को आवश्यक छूट प्रदान की। किसान ने फसल की कटाई का काम किया। क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर भारत सरकार ने उनके उत्पादन को खरीदने का काम किया। और मैं उस समय देख रहा था कि कटाई हो गई है, खरीद हो गई है, लेकिन लोग भयग्रस्त हैं, लोग निकल नहीं रहे हैं, तो ग्रीष्मकालीन फसलों की क्या स्थिति बनेगी। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान ने बम्पर पैदावार की, सरकार ने पहले से अधिक खरीद की और किसान ने ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें थीं उनकी बुआई भी गत वर्ष से अधिक की। यह हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानी की जो ताकत है, यह इस बात का परिचायक है कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन अगर ये मेरुदंड मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते ही रहेंगे और ये मेरुदंड हमारी हमेशा सहायता करेगा। आज कृषि के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर ही नहीं, सरप्लस कंट्री हैं। कृषि के क्षेत्र के जितने उत्पाद हैं, दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम देखें तो हम या तो पहले पायदान पर खड़े हैं या हम दूसरे पायदान पर खड़े हैं। निर्यात की स्थिति को भी अगर हम देखें तो कोविड के इस कालखंड में भी निर्यात बढ़ा है और पहले 10 देशों में भारत का स्थान बना है। और हमारी कोशिश है कि निर्यात की दृष्टि से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता इतनी बढ़े कि आने वाले कल में हम पहले 5 देशों में भारत शामिल हो जाए निर्यात की दृष्टि से। यह भारत सरकार की निश्चित रूप से कोशिश है। कृषि के क्षेत्र को सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए देश में 10,000 नए एफपीओ जो छोटे किसानों के लिए एक तौर से बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने जा रही है। इस पर काम प्रारंभ हो गया है। इसके नतीजे भी निश्चित रूप से आने वाले कल में देश की खेती को मिलने वाले हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में हो, इसके लिए ड्रोन पॉलिसी आई और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे उपयोग हो सकता है, इसके लिए अपने नियम जारी कर दिए, एसओपी जारी कर दी है और इस पर भी काम प्रारंभ हो रहा है। इससे निश्चित रूप से किसान को फ़ायदा भी होगा। जो पेस्टिसाइड इत्यादि के छिड़काव करने में मनुष्य के शरीर पर भी दुष्प्रभाव होता था और वेस्टेज भी होता था, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग, यह निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी भारत सरकार ने प्रावधान किया है। और सिर्फ एग्रीकल्चर इंफ्रा ही नहीं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया। कुल मिला के अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को हम देखें तो ध्यान में आएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया है।
और इसमें इंफ्रा फंड में सभी राज्य शामिल हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोगों की कोशिश है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं प्रदान करें, जिसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसान को और किसानी को मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में हम सब की कोशिश है कि किसान की आमदनी बढ़े और इस दिशा में भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर निश्चित रूप से बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे किसान की आमदनी बढ़ेगी। मैं पिछले दिनों श्रीनगर में था। श्रीनगर में केसर की खेती होती है। मैं केसर के किसानों के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। तो वहाँ पर भारत सरकार ने एक सैफरन पार्क बनाया है जिसमें केसर को प्रोसेस किया जा सकता है। तो उस किसान ने खड़े होकर हमको कहा कि पहले हम केसर की खेती करते थे तो केसर का मूल्य 1 लाख रुपया किलो हमको मिलता था। जब से सैफरन पार्क भारत सरकार ने बनाया है, अब हमारी केसर का मूल्य 2 लाख रुपया किलो हो गया है। मतलब कहने का आशय ये है कि कुल मिला के किसान की आमदनी दोगुनी हो, इस दिशा में टेक्नोलॉजी का और भारत सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार के क्रियान्वयन का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। जब कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से 2-3 प्रकार की चुनौतियां हैं। एक तो किसान की लागत कम हो, इस पर काम करने की ज़रूरत है। किसान को अपने उत्पादन का वाजिब दाम मिले, इस बात की पर काम करने की आवश्यकता है। किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, महंगी फसलों की ओर जाए, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। किसानी नए लोगों को भी आकर्षित करे, किसानी नए युवाओं को भी रोज़गार से जोड़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं इसी दिशा में काम कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि एक कालखंड था जब हमारे को खाद्यान्न की बड़ी आवश्यकता थी और हमारे साथ उस समय काफ़ी अभाव था और इसलिए उत्पादन केंद्रित नीतियाँ बनी। हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग प्रारंभ किया और निश्चित रूप से उसके परिणाम स्वरूप हमारी आवश्यकता की भी पूर्ति हुई और आज हम कृषि के क्षेत्र में अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं, उस भूमि की उर्वरा शक्ति यह भी दिनों दिन बढ़ती रहे। हम केमिकल फर्टिलाइज़र का अगर अधिक उपयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। उसका नुकसान जब भूमि को होगा तो आने वाले कल में किसानों को भी होगा और प्रकृति के साथ जब भी तालमेल बिगड़ता है तो समस्या तो खड़ी होती है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए भारत सरकार ने यह कोशिश की है कि केमिकल फर्टिलाइज़र सीमित मात्रा में डले, आवश्यकता के अनुसार डले। इसलिए सॉयल हेल्थ चेकअप इस अभियान को पूरे देश में चलाया। 22 करोड़ कार्ड किसानों को वितरित करने का काम किया। साथ ही ऑर्गेनिक खेती पर भारत सरकार ने परंपरागत खेती योजना के माध्यम से किसानों को सहायता देकर इस पे भी हम लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ काम किया है और अब नेचुरल फार्मिंग पर भी भारत सरकार का और प्रधानमंत्री जी का बल है। भारत सरकार उस पर योजना बना रही है और उस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि भारत सरकार खेती के क्षेत्र में हमेशा प्राथमिकता से देखती है और प्राथमिकता से काम करती है। हमारी कोशिश है किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होगा और किसान और गांव दोनों समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगातार सकारात्मक कोशिश की जा रही है और उसका सदपरिणाम भी हम सब लोगों के सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ इस अवसर पर बहुत सारे उड़ीसा के किसान भी जुड़े होंगे। मैं उन सब को भी यह प्रार्थना करना चाहता हूँ, खेती के क्षेत्र में हम बढ़ चढ़ के काम करें, खेती के क्षेत्र में हम खूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, खेती के क्षेत्र में हम बागवानी की तरफ आएँ, मधुमक्खी पालन की तरफ आएँ, हर्बल खेती की तरफ आएँ। जो सरकार की योजनाएं उन सब का फ़ायदा लें,
लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए खेती करते समय भूमि का संरक्षण, प्रकृति के साथ तालमेल, इसके प्रति भी हमारी प्राथमिकता बनी रहे, ऐसी मैं इस अवसर पर आप सब से प्रार्थना करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र में जो मीडिया का महत्व है, वर्तमान परिवेश में देश की गति को दृष्टिगत रखते हुए OTV चैनल अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाएगा, जिससे न सिर्फ उड़ीसा का ही फ़ायदा होगा अपितु पूरे देश भर का फ़ायदा होगा और सारे मीडिया को एक अलग प्रकार की दिशा मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि मैं पांडा परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके प्रति आदर भी करता हूं और उनका जो भावना है वो इस चैनल के माध्यम से सारे उड़ीसा में प्रभावित होगी और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम काम करने में सफल होंगे। पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। Thank you so much, sir, for the priceless words of wisdom that only comes with decades of experience and expertise. Your good words will go a long way in motivating all of us to work harder and achieve bigger goals in life. Ladies and gentlemen, please put your hands together, without whose support the 12th edition of Foresight could not have been this special and successful. OTV Foresight 2022, presenting sponsor, Jupiter Public School, associate sponsors, Paradeep Phosphates Limited and Jindal Steel and Power Limited. Can we have a round of applause for the sponsors, please? जीव जगत को बंचाई रखा हेले मृत्तिकार सुरक्षा केते गुरुत्वपूर्ण एक कथा माने समस्ते। सॉइल प्लेज ए वेरी इंपोर्टेंट रोल रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। जेमती अम्लजान बिना उद्भिद एवं प्राणी जगत बंचिबा तिष्ठिबा बड़ कष्टकर तंकर दायित्व एवं कोठी ना कोठी आजिर ए पीढ़ी धीरे धीरे कथा को हृदयंगम करबा मध्य आरंभ कर दैछंती। आज ए संपर्क रे आमे आलोचना करबा ईशा फाउंडेशन मोड्र से डिस्कशन से साक्षात्कार को तो आम निश्चित भाव में देखा कि पूर्व मु रिक्वेस्ट करी आम टेक्निकल टीम को इफ दे कैन प्ले एंड जनइब से एभिटी को प्ले करने मुझे कहबी परवर्ती समय आम साक्षात्कार को निश्चित देखा। Aspects, but we are not addressing soil. Soil, every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left, that we're producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortage across the world once there is food shortage. What we are facing now, we must understand, if you add organic content to sand content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive. Most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. To what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 19 done to our food. सद्गुरु नाम ही परिचय चित नाम जड़े सतरे से बेश जनाशुना खाली सबुथिरे से ही महान व्यक्तित्व को महानतारे आउ एक फर्द मानव सेवा जारी रखिछि। एही अनुष्ठान रे 11 इतिमध्यरे मिली सारिछि भारतर सम्मानजनक पद्म विभूषण। And media magnet from the east speaks to the saint be absolutely insightful and interesting. Ladies and gentlemen, please put your hands. This is going to be quite enlightening. Let's have the session. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram. How are you? I am very well. So many years since I saw you. He did mention that to me, and he said that you even remembered that you were having this conversation with me soon. So I said that's wonderful. It's with you 2-3 times. I'm very sorry. I usually… No. I can understand you're busy doing so much. Gave us time to talk to us today.
although we would have been ecstatic if you had been here physically, but I understand that you're occupied with your new initiative, Save Soil. Having said… I'm planning to come to Odisha and That'll be fantastic. Do let us know if there's anything we can do to help you succeed in that process, and hence you couldn't come to Bhubaneswar. Let me start with my first question. Your focus has always been to increase the consciousness among, just the scale of the initiative is so large. Tall order, I must say, on a motorcycle, and to get the desired traction. But my question is not… well, I hope it doesn't break my back. People are thinking water, air, soil are different things. Right. That's not how nature works. It is one cycle of things. It is, by 2025, 60% of Tamil Nadu could become desert. Right. I didn't like predictions, so I drove myself to see if this is for real. Then I saw it may not go till 2025, it may happen sooner, because 3 perennial rivers had gone totally dry, and bore wells where we were striking water, palm trees were dropping their crowns. So I saw this is definitely coming, and that's when we started what is called as Project Green Hands, out of which millions of trees have been planted for the farmer, plus many other organizations and the state government also has planted many more million trees. So as a whole movement, we have increased the green cover significantly in Tamil Nadu, but according to Google Maps, Google Images, it shows somewhere around 10 to 11% increase in green cover has happened since that day. Wow. So, for rivers, because we must understand in a tropical country, only in our country, in India, only 4% of river water is from melting ice. 96% is just monsoon rain. When monsoon rain comes, whatever… normally these days monsoon rains are happening anywhere between 70 to 110 days of rainfall in a year. This must flow for 365 days. If it has to flow for 365 days, soil must have a certain amount of organic content, only then it can retain the water and let it go slowly. Otherwise, everything will flow on the surface. This is what is beginning to happen right now. People are always wondering, last time even when the Kerala flood happened, people said, Sadhguru, how is this possible? 2 months ago, there was such a flood, it looked like a deluge, but suddenly there is a drought. I said, these two things are naturally connected. Right. See, when the water comes down in the form of rain, it must percolate down into the ground. Right. If it is running on the surface, you call it a flood. If it runs off on the surface, within 2 to 3 months, drought is inevitable. Right. It is bound to come, because one thing is it's taken off the topsoil, another thing is it's not sunk in where it should be. If we handle the soil properly, we can store 8 times more, that is 800% more water than all the rivers on the planet put together in the soil. That is the capacity of the soil. If we go into a rainforest where organic content may be 60–70%, if you just… any season in the year, like any month of the year, if you just dig with your fingers, not with any implement, just 2–3 inches if you do like this, it'll be damp. So if you do this to your agricultural land, I'm saying if you increase your organic content to 8 to 10%, then your irrigation requirements in the country and in the world will come down by 70%. Only 30% water you can manage the same level of crops. If you increase your organic content to 12 to 15%, you can bring down the irrigation requirement to 10 to 15% of what we are using right now. So, soil, water, air, these are not different things. One thing that most people probably… different things, these are not different initiatives, it's the same initiative, we're just enhancing the scale. What was a local program at one time, we made it national with Rally for Rivers, now we are in Kaveri calling, transforming a whole river basin which is about 83,000 square kilometers. Based on the success of this Kaveri calling, we have formed a very good partnership or alliance with UN agencies, 2–3 UN important agencies, which is why now we thought we will go global, because when it comes to ecology, national boundaries mean nothing. The life, the microbial life
and the biodiversity is not respecting your national boundaries. Earth is earth, soil is soil, it is all connected, so we cannot address ecological situations in terms of nationality or anything that way. Geography is not… only in our minds it's broken, in reality it is not broken. Yes. About my back breaking, well, this is also a test for the yogic sciences whether yoga works or not. Well, I'm 65 years of age, I shouldn't be doing anything like this. I could live comfortably by myself, but No. I'm doing this because as a generation, Right. we are in a cusp of time. Right. Right now, if we act, in the next 10 to 15 or 20 years' time, Right. we can make a significant turnaround. Still, we are in that place. But let us say we let it pass for another 30 to 40 years. After 40 years, if you try to turn it back, the loss of biodiversity, the way it is happening, most of the FAO scientists are saying on an average, 27,000 species are going extinct per year. Wow. At this rate, in 40 years' time, we would have reached a place where if we want to turn around the soil, it will take 150 to 200 years, which will be a disaster for human civilizations on the planet. So, as a generation, we have a responsibility, we need a commitment, and above all, I also see it as a privilege that we as a generation are in a cusp of time, that if we have the necessary commitment and courage to make this happen, we can turn this around. It's not some rocket science, it can be done. But if we allow this to go to the next generation, they will not be able to turn it around because it would have reached that point where turning it around is very difficult. So I'm just trying to do my bit before I'm no good for anything. No, you'll always be good for something. So, no, wow, those are really alarming facts. I'm sure this information that you shared with us, many of us are not even aware of this. But I must say that we are very fortunate that we have someone like you who's leading this initiative, someone with your stature. Because the enormity of this task that you're about to partake in is an amazing first start. I think it's a great beginning to this great initiative. But my question is, what next? Because people have short memories. Once you move on, they will move on too. Since we are all creatures of habit, we will be back to our mindless living unless this new order becomes a habit too. I'm sure you'll agree with that. See, what the movement is trying to achieve is just this. The movement is trying to bring a policy change in 192 democratically elected governments in the world. Right. Why this policy change? People keep asking me, Sadhguru, what can I do? Can I fix my garden? Can I go plant a tree? I said, don't do anything. When you are a citizen in a democratic nation, there are two things which are very powerful, your vote and your voice. Your vote, I do not know whether you cast it or not, but your voice is important. Today, everybody has a voice because of technology, because of social media platforms. I'm saying use your voice. What we want people to do is, from 21st of March, for 100 days, everybody speak about soil. At least spend 5–10 minutes a day to speak about soil, enhance the message, and we have a way of aggregating all these voices, and if it is over 3 to 3.5 billion people, that means 60% of the electorate has spoken. We are already in the process of writing to all the heads of state, we are sending a soil policy document, 100 ways or hundreds of ways as to how to regenerate soil in different regions, different soil types, different latitudinal positions, different economic conditions and different farming traditions. In all this, how to do, for each country we are writing a recommendation policy, which we… political parties on the planet, we are urging them to make soil and ecology part of their election manifestos, part of their manifestos to whatever they wish to do, because it doesn't get in there, then it's not going to happen. For this to happen, see, after all, political parties and governments are trying to fulfill people's mandate. Right. So people have to speak. Till now, people have never spoken. So people have to speak. If 3 to 3.5 billion raise their voice and say, save soil at least once, this means
Political parties and governments cannot ignore that. They will not ignore the voice of 60% of the electorate. Rally, I'm signing MOUs with about 9 nations in the Caribbean islands and those regions, and similar things will be done with many small nations. The big nations will know what to do, many of them are already beginning to do, plus we will urge them to do further. So I'm spending probably a month in South America meeting all the heads of state, another month in Africa meeting a whole lot of people, and another month in Australia and Asia, because we want to handhold small countries, and we are also establishing a group of 25-member scientific committee of, of people who are knowledgeable about this, who can handhold small nations to go through the transformation. If by then, if UN agencies and governments and other financing bodies, if they handhold the small nations, very easily it will happen. We will see, but the most important thing is, it must go into the policy. Why it must go into the policy is, see today you have, let us say, 100 acres of land, you are keeping it really well. What the next generation will do, you do not know, unless it goes into the policy. Only if it's in the policy, it will be maintained for generations to come, and that is what we are trying to achieve. Once we get into the policy, depending upon the direness of the situation, how bad the situation is, accordingly different nations will act at different speed. But no nation will go without acting once it is in this policy. Speed may vary from nation to nation, depending upon various realities of that particular nation. Right. I think you've done a lot of groundwork, I see, and that's excellent. May I just shift the focus to the topic for Foresight today? As you know, today's Foresight topic is the New World Order, winners and the disadvantaged. So just a little bit from the COVID experience, the consequences that were derived from COVID-19, as you're aware, are not just the virus itself, but it is the grief of waking up and to realize that the lifestyle that we have been evolved living in is unable to cope with the pandemic. And that what is happening now was predictable. In fact, a lot of experts had predicted in the past. So I think fortunately many people today have realized that if we do not make a conscious choice to change our course of action, whether individually or collectively, we will get more of the same. So I think my question here is, then does COVID then give us an opportunity, the COVID experience, to build that conscious planet that we want to do and build it now, since this momentum will not last too long? Every situation is an opportunity to change if you are conscious. Every situation that you face, pleasant or unpleasant, you can use that. Unfortunately, people have lost lives. Nearly 6 million plus lives have been lost on the planet because of this COVID. That is an unfortunate situation. I don't know anybody around me who has not lost somebody that they knew, a friend or family, almost everybody has lost someone. But those of us who are alive, who lived through this, we are crying about our lifestyle. Right. We should stop crying about lifestyle, all that will happen. Well, anyway, once again, India's economy is surging, and because of, whatever, because people strive harder when things go bad, so I think that striving is paying off. And I think the administrations are also doing the right things, so it is all paying off. And as a nation with 1.3 billion people, I think we have come out of it spectacularly well compared to many much more developed, economically much more capable nations. Compared to them, we have come out very well. And the way we have produced vaccines and the way we've administered that to an entire population is commendable, yes. For the rest of the world, it's quite a miracle, the way we've done it, because you don't see that kind of medical infrastructure on the ground, but somehow people have done it. Everybody has stood up and made it happen, from the lowest level of worker, from the… in the medical teams and the administrative teams, from the lowest cadre to the highest, I think everybody has stood up and done what they have done. I think we need to hugely appreciate that.
because, we were active in the villages. What I saw was, from a police constable to a village accountant to everybody, suddenly they were transformed human beings. They were all functioning with such sense of service which we have never seen before in them. So that was really great to see that when really difficulties came, their humanity became the most important quality in them, not the other aspects of their life. Right. So that's great, but at the same time, one thing that COVID has done is it has hung mortality in our face. Yes. Mortality is always hanging in front of us, but most people think they're immortal. Yes. Unfortunately. But COVID has made mortality very obvious because people around us started dying. Right. And when mortality comes into your awareness, when you understand you're mortal, that means the way you know yourself right now could end right now or tomorrow morning or whatever. When you realize that, that is when you will really start seeking what is beyond this. What is beyond this physical body? What is beyond this social engagement that I have? When that question comes, that is when you turn spiritual. Spiritual process is always relevant only because somebody realizes that they're mortal. Right. See, suppose you and me were not mortal, we are here forever. Yes. What would spirituality mean to us? Nothing. So, mortality is an important thing. That is the fundamental fact of our life. When an individual human being realizes that, they out to the world and offer these possibilities, and millions of people have taken to this. Just to give you some sense of the seeking that has happened in the world, in the year 2020, our video views, just one organization, our video views, just me, one person, all right? Our video views have been 2.48 billion. Wow. B, Wow. not M. Yes, that's a huge number. This is because there is a longing, there is a seeking. Suddenly people realize the simple things, petty things they were fighting for suddenly is meaningless. They have to look for something more profound, which is a good thing, but it need not come this way. Disasters need not strike for us to come to our senses. I hope people come to senses without inviting disasters. No, well, it's happened, so we must make the best of it, I suppose. We must find that silver lining, and I think your initiative… What life throws at us… Yes, and… is not always our choice, but what we make out of it is always our choice. We must make 100% choice about that. So I think your new initiative comes at the right time then, because, we are still kind of, No, you should not say new initiative, same initiative. The same initiative, but the large initiative. We're just changing gears, that's all. That's the wonderful initiative, I should say. I come from a business background, so I'm constantly actually, whenever I see an initiative, especially like this one, I'm constantly thinking as to how we as a business community can contribute to this cause, of course, other than the usual CSRs and all that. And the whole idea of investing in something like this, it's a long-term investment, and since long-term investments are needed to make any change to the key areas of soil health, is it possible for us to make a compelling business case? Because that's probably what is required, considering all the facts and the numbers that I saw. They're absolutely mind-boggling. Well, yes, very much possible. I could articulate this for hours for you, but right now I would request all businesses to focus on this one to enhance the message. You don't have to support me. Right. All you have to do is from March 21st, in a concerted way, all of us speak about soil. Just make the message as big as possible. Only then you will have the needed policies. When the policies are there, then business communities can see how to participate. We have a whole plan as to how individual businesses can participate, or as groups of confederations or other things can participate. But individual businesses can make a business case out of this. I'm saying it can be very, very profitable for industry and business to get into this. There are many ways. I don't want to say this in without the necessary detail because it may not make sense to people, but there are many, many ways in which
one can make a very good business case, a long-term business well-being, a long-term investment, and extraordinarily good returns, and above all, ecologically enriching. Right. So wow, it was really wonderful just talking about this. Like you said, we can keep talking about this issue because it is a very vital and large issue. But I must invite you once again to Odisha. As you know, we also have rivers here that are drying up, and perhaps maybe a little bit focus on Odisha will help. Just before I end, I want to thank you one more time for taking the time to talk to us. And I'm sure that just hearing you, just listening to what you said, I get a sense that, this initiative will be very, very successful because of the kind of efforts that you're putting in. I do wish you all the best. And I hope that all the people who are listening to you will feel the same way and take action on this. Thank you very much, and I definitely been planning to come to Odisha when I'm a little more free. Apart from doing work, I just want to come to Odisha because of Konark and Bhubaneswar. You must I'm very interested. As I said, I'm also talking to somebody about the Bali Yatra, if that takes shape. That will absolutely be fantastic. And about reaching out to the people, about the Oriya people participating in this. As I'm writing these 100 days, I'm available. Even when I'm writing, I can broadcast a video and audio. So, every day if you publish some 2 minutes, 3 minutes of this for the people in Odisha, we'd love to. I think we can activate the whole state. Definitely, it will be my pleasure to be participating in this. I will learn a few words from Oriya language. We would really like that too, yes. I think… You must translate me, that's the only problem. Of course, no, we will do that. We will definitely do that. But thank you very much, ma'am. Thank you, Jai Jagannath. Jai Jagannath. Namaskar. Namaskaram. Thank you very much, Sadhguru, for sharing with us your thoughtful insights. I think Save the Soil shouldn't just be Sadhguru's mission, it should be everyone's mission. And in 21st century, being grounded shouldn't only mean being humble, it should also mean respecting the soil, the ground you stand on, and you are dependent for your very own existence. Thank you very much, and thank you, Srimati Jagi Mangat Pandaji, for those thoughtful questions and for bringing to us such a special session that we will remember for years. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Padma Vibhushan, Sadhguru and Srimati Jagi Mangat Panda. What a brilliant session that was. I'll once again take this opportunity to thank our sponsors. Ladies and gentlemen, OTV Foresight-2022, presenting sponsor, Jupiter Public School, co-powered by Panasonic Air Conditioners, supported by IMFA, co-supported by S&M Group and MGM Minerals, and associate sponsors, Paradeep Phosphates Limited and Jindal Steel and Power Limited. Please give a generous applause to all our partners and sponsors. Thank you very much. Those are really beautiful and inspiring words from Sadhguru. All right, it's time to move forward. OTV Foresight 2022, changing times, changing minds. आरंभ करबा हमर परवर्ती पर्याय आम सहित उपस्थित रहिबे गोपाल कृष्णा JSS country head market function and product group head at TCS Iron. I would request him to join us, but before that we have AV. I will request our technical team if they can play that AV. Then Mr. Gopal Krishna JSS will join us on the stage. Can we have the AV, please? Gopal Krishna GSS, Tata Consultancy Services by TCS ର country head, market function एवं product group head TCS Iron. वाणिज्य और व्यवसाय क्षेत्र में एक चर्चित और बेस जनाशुना नाम. व्यवसाय और वाणिज्य परिचालना क्षेत्र में तांकर रहिछि एक लंबा अभिज्ञता. 27 वर्षर कार्यकाल भितरे बिजनेस, सेल्स एवं मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि विभिन्न क्षेत्र में कार्य करी
निजर दक्षता प्रदर्शन करिबारे सफल होइछन्ति गोपाल कृष्ण। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पूर्वरु से विलियमसन एंड मागुर ग्रुप, करियर कॉर्पोरेशन एवं वोल्टास लिमिटेड रे कार्य करछन्ति। व्यवसाय वाणिज्य संपर्कित अनेक उच्च कोटीर लेखा तांको भिन्न एक परिचय मध्य देछि। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बा बिट्स पिलानीरु से एमटेक डिग्री हासिल करछन्ति। तेबे ओडिशा सहित रहिछि तांकर एक मधुर और सुदृढ़ संपर्क। भुवनेश्वर स्थित जावियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रु से एमबीए डिग्री हासिल करछन्ति। तांकर निष्ठा और अभिज्ञता एवं दक्षता पई से अनेक अनुष्ठान द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित मध्य होइछन्ति। Namaskar. Thanks for the lovely AV which I saw. It's very surprising to see these photographs from where you people have got it. But it's really gives me a great honor to come to this Bhubaneswar once again, so which I spent a couple of years, say 22 years back. And I must thank Ms. Jaggi Panda and OTV for giving me this opportunity to speak on this Foresight annual convention, which is organized, where wisdom and experience meet. Distinguished speakers and respected guests, it is indeed a great privilege and honor for me to keynote speaker among the August gathering. At the outset, I wish to extend my gratitude to our health workers, central and state governments, media and civil society for their humongous contribution in containing the havoc that COVID-19 pandemic brought in its wake. Precious lives were sadly lost, livelihoods were largely impaired, thus alerting us to value health, environment, near and dear ones, which we so often take it for granted. The pandemic also brought forth to us, the world citizens, some stark realities and pleasant discoveries. We now know the limitation of mindless expansion and exploitation of nature, as well as the power of technology and the value of being with our loved ones. In effect, the pandemic has left us with a completely different world, with tightened global financial market conditions, behavioral changes, and altered consumption patterns. This pandemic did not just stress our system globally, but also exposed the existing gaps to our systems, forcing all of us to identify the loopholes, thereby regroup, reform, and reinvent ourselves. As an outcome of this pandemic, India has emerged as a world leader in the new world order. By the end of financial year, India officially will become the world's fifth largest economy, overtaking Britain. According to several global financial institutions, India's GDP will be the world's third largest GDP at $8.4 trillion by 2030. India will play a pivotal ad jingle. बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ना सिर्फ टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, बजाज, it's also you and me. Our Honorable Prime Minister has also urged Indians to help make the country a global leader in the post-pandemic world. During one of his speeches in Parliament, he said, quote, "We are living in a new world order. There has been a new turning point after pandemic. We are being recognized as leaders. India must take on the global leadership role and underestimate itself in playing the leadership role," unquote.
India has already proved its mettle in several critical sectors in the world economy. All of us, we know that IT and IT-enabled services has been the strong drivers of the Indian service sectors. Our reputation as the pharmacy of the world and the source of low-cost generics and drugs is not unknown. Agri-based food processing, textiles, automobiles, electronics are some of the fastest growing industries in our economy. Name any sector of the economy, it's on a high growth path. In fact, last evening I was going through some article where they say in last 5 to 6 months in India, bicycle sales has been doubled. So it shows that how conscious we become about our health, global issues, and which also is giving a boost to the economy in the other sectors. With the theme and thought leadership that this distinguished forum presents, we should take this opportunity to take a step back and ponder on the strengths that gave us the laurels in the new world order and the areas which we need to focus in order to take us in the winning league. Now, who are the winners in the new world order? Where smart innovation in every sphere of life take us a pleasant surprise. In my humble opinion, they are the ones who have humility to unlearn the old and courage to learn the new, irrespective of age or hierarchy. Winners are also the ones who have invested in upskilling and meticulous research and innovation instead of rote learning and mindless job schedules, which has created multiple innovations in bringing digitization of assessments, evaluations, business processes, and learning in the country. India has the potential to emerge as the preferred destination for higher learning and skill building. With the internet penetration rate estimated to reach above 55% by the end of 2025 in India, digitization of education remains one of the topmost priorities. Many e-learning portals have appeared and are performing well as an increasing number of learners enrolls themselves for online courses. I can think about a recent example which I can give, that University Grant Commission has already approved and allowed higher educational institution to start the online courses, the degree and diploma courses, which again gives a very big boost on the learning aspect, certification aspect, and education aspect, and the literacy aspect in this country. Now we come to the disadvantage of the new world order. Unfortunately, with a history of wars and conflicts, exploitation and other natural factors, we do have disparity in terms of access to education, healthcare, and economic opportunities for the disadvantaged. And if the disadvantaged are not empowered and included, the winners shall not be truly winners. But I do insist that digital technology presents thoughtful and powerful solution to overcome these disparities, which was not possible in the old world. But notwithstanding that, we must develop a sense of empathy for fellow human beings, for all of us to emerge as a winner. We must not forget that during the peak wave of COVID-19, when most of us were feeling helpless, we saw selfless volunteers who arranged for life-saving equipment, hospital beds, etc., using simple messaging and communication apps like WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, so on and so forth. It goes to show how empathy can empower all of us to achieve exponential outcome using technology. Sustainability is also a part of empathy. If we are not to be truly empathetic to our future generation, we will be conscious in our consumption and exploitation of environment and natural resources.
I'm proud of the fact that Tata Group has these values enshrined in our code of conduct. Yesterday, 3rd March, we celebrated the visionary founder of Tata Group, Shri Jamshedji Nasarwanji Tata's 183rd birthday. We at TCS Ion also did a bit in providing TCS Ion Digital Classroom free to all, this solution free to continue routine classes in primary, secondary, and higher education institution in the country while they can learn in home during this pandemic period. We converted our delivery centers across the COVID care centers with full medical support. Many of my colleagues turned into a full-time volunteers, even as ambulance drivers in some cases, because all of us, we knew that ambulance drivers were shortage in the second wave of COVID. Apart from empathy, I would also wish to bring about overcoming our cognitive bias, like over-dependence on information available in social media. A cognitive bias is a subconscious error in thinking that leads you to misinterpret information from the world around us and affects the rationality and accuracy of decisions and judgments. You must be thinking why I'm talking about the cognitive bias. The reason I'm talking about these biases, and there are many of them, is because often we overlook facts, research, data, and merely go by conviction. All of us, we heard that information is power. And now information is available, the same information is available to everyone in one click of a button. But now, in new norm, effective use of information is actually a power. India is at the cusp of digital revolution in the education sector, and it is paramount that as government, as businesses, and as individuals, we take rational decisions. If we must be leaders in the new world order, then success will come through investment in high-end research, digitization, attention to data and insights, well-laid out plans, policies, and adherence to these policies. Standing in the land of exquisite art and culture, that is Odisha, I do ponder often on the role of art and culture in the new world order. Art and culture has been proven to be soft power of our nation across the world. It is this soft power that world recognizes time and again and make us a heritage-rich nation. As I come to my end of my address, I reflect upon the words of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, where he once said of making India as a Vishwa Guru, I do dream of coming times when our future generations shall hail our country as the Vishwa Guru in the new world order. Thank you and namaskar. Ladies and gentlemen, can we please have a huge round of applause for Shri Gopal Krishna GSS? That was absolutely insightful. Thank you very much, sir. So you spoke about some biases that one should be wary of when designing a product or strategy for government bodies or edtech companies. Why do you think those biases play such a critical role? This one? Yeah. So when we started understanding that how the technology can give an effective in the education sector in the country, almost a decade back, we have seen the various things which were happening. A, resistance from legacy to adoption of technology. B, the apprehension of the effectiveness of the technology. And these were happened basically when people have a notion about that, cloud may be the safe place for keeping the data. That is how these things which has happened, and that is how we understood that, these biases definitely
is there because of the half or not correct informations which people have. Second thing in this aspect is where when this took a growth path, when the adoption of technology took a growth path in the country, at that time, lot of other technology players which has come and not doing a proper analysis and the data and the research, and they started using the technology in this space. Then eventually what has happened is, in between, people have started having a different biases that how it is safe to use a technology here, whether my data is safe, my entire activities which I am doing day in, day out is going as per the required to the institutions. So there are players who are like serving half-cooked meals, and that is adding to the biases as well. I'll not say half truth, but definitely, yeah, I think they have to do more research, understanding more, and because future is technology.